If we break 2589 Nifty, maybe go up to 25950. MiDCap also want to move up, EMI 20 EMI above. So you can stop loss put here 19137. Then you can use stop loss here. Stop loss, but take trade tomorrow, not today. Take next day expiry tomorrow, next day expiry. If you take next expiry, the premium will be less, but it's okay to take next expiry. कि प्रीमियम जल्दी से जल्दी अभी ऐसे है 130 में आपका नीचे गिरेगा, उसके बाद 130 145 में भी टेक टुडे. Wait for the candle close, 1 minute left actually. Which 7.35. Nifty IT is less, maybe Nifty take time. The Nifty bank, Nifty 50 or private bank, everything 20% one. Sorry, 21.146 point. Nifty next is 1000 point.
Bank Nifty give you the breakout, then again test, you can go for the trade. The Nifty also already 25,899 if you cross, maybe go to 25,950. So already given morning breakout like 10 a.m. Now Nifty want to go top. MiDCap, this is the stop loss if you want to take the trade. Bank Nifty 54,070 above market stay, then Nifty Bank will be 54,225 next level. The two wait for candle close. The close above 66. You can take this to our stop loss there. Spend some time, maybe another 10 to 15 minutes. Probability is there.
Nifty mid-cap will be, if you spend 15 minutes, the market will be go up bullish. Bank Nifty HDFC almost 1% up. ICC Bank 1.40 minus. State Bank almost 2.85% up. ACC Axis Bank 0.22 point. Kotak Bank 1.5%. Punjab 2.48%. Bank of Baroda 3.65%. Indus Bank minus 117. IDFC First 1.14%. AU Bank 0.35. Federal 1.63. Bandhan 0.95. Almost bank sector everything is bullish except ICC Bank. ICC Bank is minus 1.50. So if mid-cap also Vodafone 5% up, Sep24, Polycom 0.63, Indian Hotel 1%, HDFC AMC almost 60% up, Lipin 0.1, Godrej Properties 5.7%. So mid-cap today's expiry, maybe you spend some time here, another 15 minutes. Once if you crack 13200, the market will be touch another 44 point. आप लोगों को क्या लगता है ग्लोबल मार्केट बहुत जो है बुलिश है?
Acknowledgement of the current market landscape. Highlight any recent economic data such as GDP growth, inflation rate of the stock market performance good since Wednesday. You can identify some of the opportunity of sector specific opportunities, identifying the high probability sectors such as clean energy, biotech, startup, and financial service. Some of the good stock you can go for. Sustainable and green economy. The shift toward the sustainable energy and responsible the business better than transforming the market. So this week the market may be 20 Nifty 26,000 to 27 to 26,500. You can go up. Production. So most of the top 10 point after Wednesday, last Wednesday, this market is looking forward. Call to action, end on the position, not how. Most of the index is now bullish. See, whatever you do or by and large keeps trailing stop loss. Reason is we never know. Market is now like higher and higher. So every 10 point, 20 point, we have to trailing stop loss.
What is about our channel? Channel is our channel. Trade Live Spark. What do you do? Focus. We will, whether education, entertainment, tech, review, or personal, it is important to choose clear them than your position about. Research and analysis for the market. Like everyone do support and resistance, everyone do, but we called our setup. The setup always we wait for trade. The setup we have to create. So what we are giving, that's our analysis, our experience with. We are giving the like market go like this and there, and the amount we, for example, MiDCap today expiry according to the chain. We says market maybe go to up to 13.2244, or the mid is 13.177. The bottom is 13096. This setup you have to create yourself, unless you have to sit every second and watch and what doing market. According to the market, you have to drawing your line. This mid line, top line, bottom line. So you want to scalp for the setup. First you have to fix the bottom line and top line and the mid line. Second thing in the market, whichever you want to spend capital, only one lot. Use one lot. Your capital should be increased 3 times, 4 times, and 5 times at least. At least 3 times, 4 times. Then only go for the more lot. Or trading per day, the beginner should learn, not focus in money. Focusing skill, focusing your creativity, plus market will test you. Patience. You have to wait and wait with your setup. If you are getting your setup, you can take the trade. Whether P, C, up to you. So you have to create your setup. After creating your setup, you will understand the setup. Don't do the copy. Any YouTuber will set up according to, if I am doing this according to me, I'll give the confidence highly. We draw the setup. Same thing, you have to create your setup, and the setup you have to back test. Back test means you are putting the setup today, wait for the setup, the setup come to your market. Yeah, you are waiting for the market and take the trade and exit. Unless you are not putting the setup, don't hurry for it. No Allah. Try to go with your own setup. The references we are giving the reference idea. Where should market go and come? That's our experience. You have maybe good experience. You may be learning that you have to create your own setup. Create your own setup. That means you are following the market and you are studying every handle strip.
Simplicity, complete concept. If you break down, trade can be the intimidated for the newcomer. For example, terms like candlestick pattern, moving average, and risk management is simple, clear. Clearly can see the can, whatever indicator you can use, but most of the time we are not going to believe that you are putting indicator that okay, no problem, I can wait for the market. मार्केट आपके लिए इंतजार नहीं करेगा. मार्केट के साथ जाना है. आपने इंडिकेटर लगा दिया, इंडिकेटर बोलने के बाद भी आप एग्जिट नहीं हो रहे हैं, एंट्री नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब हमारा रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं. वेयर इन्वॉल्व इमोशन. If you putting the setup including chart, graphic, and diagram and illustrator or any point visualized learning key trading education. So this is all reference. Is what do we do? We give the only reference. The trade you have to take or not take, that's entire your choice. Live trading section, when you are sitting in the live, you may be after the live look like easy, but real time live you are not able to take any decision whether market go ups and down. So where is you have to very clear about your setup. If in the setup is very clear, what to do, what not to do. Stick to your business. This trading is business, not satta bazaar. Be honest with you. Do not over promise to yourself or do not assume that the market will go up and down. According to the technical, basic technical analysis, this setup is, if you create your own setup or any setup you are following, stick to setup and stick to, if you're taking the one lot trade, you are maybe 1% or 2% you're ready to give the market, then maybe you take 2%, 4%, 5%, 7%, I have no idea. So up to, we don't know the market where a go up, but in the losses you can control. When you lost the control, that means in the capital amount of only 1%, only one trade, a maximum 2 trade per day. Back record, track, analysis, and envelope. Your data every day, evening, you can analyze yourself and record it. And where went wrong. Put your setup and take the record, and whenever you have the time, go for analysis. Whether you taken the trade emotionally or you are taken the trade with your setup. When you are drawing any setup, then you should know why your resistance and support, demand and supply, why the market come to here and went to then again opposite direction. So the expiry, of course, option chain is workout. For example, option chain now is 13th for MiDCap 13,200. There is the 60 lakh people in, sorry, 59. Look at 2 crore almost. IO is 1.7 crore. This is market go down. But you see the option sign is 1.23 crore. People say they taken the put option.
but that means the market go up. But OI change is 1.17 crore. So the between 13,200 to 13,150 is, you see the one on the put option people take the almost 3 crore people. Here is almost 3 crore each in the market taking sideway. Sideway in the sense they run 13,1772, another 30 point up and down. They move only 30 point up and down. So if you take a trade, any trade, there should be 20 point, only 20 point. 20 point results you have to take quick trade scalp. The scalper can do. Scalper, who is the scalper? They take the immediate decision. You cannot wait for that. You have the one candle or two candle maybe. So that is the strategy. But anyway, you have to put every trade, stop loss, your capital 1%, whichever you have to fix the losses fix first. Then fix the loss first, then you maybe get the any money is okay. हाँ ना For international markets such as SP500 and the Nasdaq 100 have presented to buy opportunity investor. This dip is being viewed as a correction rather than the state of new bear market. Index, see, Nifty coming down, MiDCap is going up, Bank Nifty also try to do something.
Today, the Indian stock markets saw positive movement, with the Nifty 50 highest new high crossing 25,900 point. Gain were led by auto and pharma sector, while ONGC shrunk due to the rising oil prices. However, Indian bank faced a decline facing over 1% aimed broader market for nearly 2% gain for the petroleum. The outlook of the week remained bullish, with the Nifty expected to face some resistance around the 25,950, but alarming for the potential raise 26,200. Today market, you see the Parma company, Parma, Nifty Auto, Nifty 100, Nifty MiDCap, Nifty Next is 1,000 point.
Auto is 300 point above. Pharma is 100 point above. Uh, FMCG is 400 above. The while it's almost the outlook for the week of remain bullish. The next except to face some resistance around 29,950. Am I aiming for the potential raise of 26,200? Maybe this week you can see 26,200 will be 200 will be Nifty. So huge next break time, next break of Nifty. The Nifty mid-cap sector index is trading positively, continuing the upward trend from previous actions. As of September 23, in index increased 0.61%, closing around 13,200 point. Over the past week, it has seen fluctuation, but the mid-cap stock are showing strength overall. Notable, the index touched at 52-week high and 13,407 point recently. On the technical front, the index is trading below both in 30-day and 200-day exceptional moving average EMI. You can check out VMI or RSI in the 200 average. The short-term investment supporting level for the day are almost around 13,700 point, with the resistance of project 13,152 point. Breaking through those level could signal the next direction for the index. Keep an eye on those key technical point of make informed decision. So market is bullish trading. Keep in mind. Today, the Bank Nifty reached a record high, breaking its proving this peak after 3 months of the consolidation.
It closed at last 53,793, now up to 1.4 for 42, drive by the strong performance from the major banking stock. The rally was supported by renewed interest from the foreign institutional institute FII and the Norwegian credit deposit gaps improve the outlook for the braking sector. Looking ahead, analysis export in research for the bank Nifty at 54,000. At a close above this could lead the future gain toward 54,280 or 54,440 on the downside. Support in export around around 53,320 is good support. So this also this week opening day, first day is doing good. निफ्टी ब्रेकआउट किया है यहाँ पे 25899 में और दिस इज योर small stop loss. So now creating, if we Nifty also going up, Bank Nifty also breakdown. So we given the this now become the this will become the support. Wait for this candle. ये कैंडल और 1 मिनट का है, 1 डेढ़ मिनट का है. The Indian stock market is expressing is a steady performance. Both the Nifty 50 and Sensex have been showing the strength, with the Nifty closing near its all-time high of 25,418 points, supported by the gain in large cap sector like IT, FMCG and the private banks. Overall, the market are considering near those high level, I think clear direction for the global cues, including the USA Federal Reserve upcoming the rate decision. The Nifty Bank Index saw a slight decline of 0.12, while public sector bank unperformed with a 0.6 drop in the PUC Bank Index. Meanwhile, the mid and small cap indicate have experienced some correction after strong bull run, reflecting the typical volatility following high growth. So overall, I'm giving the market view after this week actually. Market is now bull. Take the trade, but no emotion. You have to wait for your setup. Your setup is there.
keep the first how much you can lose, how much you can give to the market. That's called stop loss. Stop loss, whichever you have to fix, you have to fix it. After taking the trade, within second you have to put the stop loss. Distribute those movement. India market overall has outperformed many global index, with the Nifty and Sensex having the gain 18.7% and 17% 2024 recently. Investors should remain constriction at the short time correction, but they can accept opportunity, especially in sector like pharmaceutical and real estate, which have some potential for the sustained growth. So growth तो है आप आज आप इसका we look at the overall market like and this Nifty or Nifty 100, Nifty Auto, Nifty Pharma, Nifty this 100 point to 1000 point. See, small cap is 100 point, and Nifty mid cap is 400 point, FMCG 500 point, Nifty IT is hovering to 300 point below. Okay, but Nifty managed 230 point up. Nifty small cap 200 point. If you look at the BSE also doing it. BSE IT is not working. Even BSE IT and as well as Nifty IT is the 300 point, 250 point less. But all the market BSE 500 Bank Access or BSE Healthcare, BSE Auto, BSE, so all the market above green light, the trading level. So definitely Indian market is now so good growth. This today expiry of MiDCap, that's the reason you can see there is going to spend time lot here. Today expiry, the premium they may see. We are giving the analysis. If you want this breakdown, they go to market 52217 or even Nifty also. Is likely said that 25,950 maybe 20 even. Purely we give the education for you, but also know you have to recall yourself and you have to work backtrack and what you did in early correct and go with market. The best way, very easy way, make first your setup. Once setup is very clear, then you lose or loss, take the trade. Setup give only the giving the confidence. Only setup give you the confidence. How to make your setup, that is your own caliber. You maybe have a lot of idea. Everyone have the lot of idea and creativities, but you have to take. See the setup I given morning time also. Morning will I give the live. That time I given the setup. Setup how to draw the line. The draw line is you have to go with the options chart or lost previous market were closed and open and close. And according to the data, today market perform. So most of the
support and resistance, they're supporting. The resistance 1, resistance 2. This is support 1, support 2. Market already, see, already where market open in morning time, and after that market 9:20 is a come down. After that the market is going up and up. What is setup? Basically nothing is setup is very clear. Where you think the market will be go up above uh, from opening to 500. For example, in Bank Nifty, maybe go to 500 to 2000 point. In the bottom, 500 to 1000 point down. This is your setup. You have to decide how to make the setup. Once you decide, it's very clear. You have to go with slow. The trade is you can take एक दिन के लिए ट्रेड, 2 ट्रेड 3 ट्रेड ऊपर नहीं लेने का, क्योंकि फिर ट्रेड यहाँ आया ले लिया, वहाँ छोड़ दिया, लाल आगे दिया, हम नीचे जाए, ऐसे नहीं. वेट करो, ट्रेड लेने के बाद 15 मिनट आप ट्रेड का पहले एनालिसिस करो, ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कैंडल तो ऊपर नीचे जाता रहेगा. तो इसका आपका एनालिसिस करना आना चाहिए. एनालिसिस किस दिन आ गया उसके बाद आप ट्रेड लेना बड़ा आसान है. ईसी तब हो जाता व्हेन यू अंडरस्टैंड द ट्रेड. Anyone like our idea, you can give the subscribe or like or forward and share. Trading lives for, you can write the letter to trading livespark@gmail.com. What we give the analysis very basic, very basic. Then once you understand the basic, if you maybe have the running the car with road, but the road actually have the heavy traffic. You have the car like BMW, Mercedes and Maruti, anything 100 to about 200 kilometer, you cannot go. The reason is road is full. Same thing, the if you have the open highway, nothing is there, the car should have the brake. If you have the brake, that's called in market stop loss. स्टॉप लॉस आप कितना होना चाहिए, आप डिसीजन ले लो अपना. आप एक ट्रेड में कितना दे सकते हैं मार्केट का, कितना दे सकते हैं मार्केट का, वो एक बार डिसीजन ले लिया, फिर मार्केट का आपके लिए ईजी है. ये मत सोचो मार्केट में मैं कितना लेऊंगा, क्योंकि वो आपका कंट्रोल नहीं है. कितना लेंगे, कितना देना है आपका फिक्स है, मैं इतना ही दे पाऊंगा आज. उसके बाद आपका बनता है मार्केट ले रहो, नहीं होता आप देखता रहो या क्लोज कर दो. इमोशन के साथ मार्केट में बिल्कुल मत करो. पेपर ट्रेडिंग करो, डोंट प्ले विथ द गेम विथ द मार्केट, फिर वो गैम्बलिंग हो जाएगा. गैम्बलिंग नहीं करना. एनीथिंग, डॉक्टर, इंजीनियर, एनीथिंग, एग्जाम, everyone study 4 to 5 6 year. This is a practical experience. You work on 1 year 2 year with one is intelligent, another thing ICO. So good understanding with you and your mind and soul. You cannot use emotion in market. मार्केट इमोशनल साथ रहेंगे, आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट कर देगा. कैपिटल उतना ही रखो, एक बेसिक एक स्टडी करने के लिए आप कर रहे हैं, जैसे वर्कशॉप के लिए. इफ यू डू द फोटोग्राफ, एडिटिंग, ग्राफिक, डिजिटल कंटेंट, ट्रैवल फिल्म, ऐसे ये मार्केट आपका एक ट्रेडिंग करने के लिए एक मिनिमम अमाउंट रखो. दैट्स 1 लॉट लेने के लिए, उससे सीखो. तो प्योरली जो बिगिनर के लिए मैं सिखाने के लिए बैठा हूँ, इसमें ज़्यादा मैं इंडिकेटर ये सब लगा के कोई फ़ायदा नहीं है. इंडिकेटर जो हो चुका है वो बताएगा. इंडिकेटर गाड़ी में राइट इंडिकेटर अब लगा रहे हैं, मैं पास अवे हो गया, मैं जाऊँगा, वो जा चुका. आपका इंडिकेटर मतलब हो चुका है.
मार्केट का इंडिकेटर जो खाम हो चुका है उसके बारे में एनालिसिस करके आपको बताएगा ये 20 EMI, 200 EMI, 50 EMI, 100 EMI, व्हाट हैपेंड विद मार्केट। बट प्रेजेंट लाइव इज टोटली डिफरेंट। लाइव में आपका डेटा कितना आएगा नहीं आएगा आपको कुछ पता नहीं है, लेकिन आपका एक लॉट लेंगे तो स्टॉप लॉस यूज करना पहले सीखो। फर्स्ट सेटअप, सेकंड ट्रेड लेने के टाइम स्टॉप लॉस यूज करना सीखो। मार्केट का जो देना है आप दे दो, उसके बाद आप नहीं कर पा रहे तो मत ले लो, दूसरा दिन उस दिन ट्रेड मत लेना। एक बार स्टॉप लॉस हट गया आपका, उस दिन ट्रेड नहीं लेने का। एनालिसिस करो क्या मिस्टेक किया, मार्केट ने क्या मिस्टेक किया, मार्केट ने ये नहीं किया, मार्केट ने वो नहीं किया, उसने ऐसे किया, वो बोलने से कोई फ़ायदा नहीं। खुद गलती करते हैं हम, दूसरे के ब्लेम करते हैं। दूसरे के ब्लेम करना छोड़ो, इमोशनल अप्लाई नहीं करना। आपने बता दिया हमने ले लिया, वैसे भी नहीं। किसी ने बताना, किसी ने लिया, वैसे भी नहीं लेना। आप एक सेटअप बनाओ। ये सेटअप का एक आइडिया बता रहे हैं, ये एक सेटअप कैसे बनाते हैं। ये सेटअप बनाओ। ये सेटअप बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका फर्स्ट बेसमेंट मतलब बेसिक फंडामेंटल है। बेसिक फंडामेंटल आप छोड़ दो, पुराना क्या क्या नहीं किया। बेसिकली एक सेटअप बनाओ। सेटअप बनाने के बाद भी मार्केट में कुछ आप काम करेंगे तो आपका माइंड पीस, क्लैरिटी रहेगा। क्लैरिटी विथ प्लेजर एंड बिलीव यूर सेल्फ। आपका सेटअप में आपका कुछ काम होगा तब आपका करना है। वैसे बोलने के लिए बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन इतना बोल के आपका भी कोई फ़ायदा नहीं है, हमारा भी कोई फ़ायदा नहीं। फ़ायदा ये है कि इतना हम कम बोलेंगे, बहुत मिनिमम। आपका बहुत सारे टूल्स यूज़ नहीं करना चाहिए, तो R&D के लिए यूज़ करो। बट आप किस दिन सेटअप बनाना सीख लिया उसके बाद इंडिकेटर अवॉइड करो। कैंडल मूवमेंट देखो, आपका फाइनेंस के क्या सपोर्ट है, आपका ऑप्शन चेन क्या कहता है। तो मार्केट का आज ओपन अप हाई हुआ, ग्लोबल मार्केट क्या कराया, उस हिसाब से आपका सेटअप बनाओ। 3-4 चीज़ से सेटअप बनता है। What is the clarity? If you ordering anything in Amazon, you have the thousand of product in online. You are selecting product, that's a clarity. You are choosing the amount. The after 2 days, wait for some time. After 2 days, 3 days, your delivery on the door. Same thing in market. मार्केट में आपने एक सेटअप बना दिया, आपका उसमें लगा दो, उसके बाद आप ट्रेड करो। उसके बाद आपके सेटअप में आ गया, आप ट्रेड ले लो। आप सेटअप के अगेंस्ट जा रहा, वो स्टॉप लॉस काट के दे दो। आपने यहाँ पे मिस्टेक किया है। मिस्टेक हर कोई करता है, क्योंकि मार्केट का कोई नहीं प्रोडक्शन कर सकता, तभी तो लाइव है। लाइव इन द सेंस अभी तो अभी है, जो गया तो गया, उसके बारे में नहीं सोचना। द ऑन एयर वीडियो फॉर द हेल्प द न्यू एजुकेशन। जो मार्केट में नई कुछ करना चाहते हैं या कर चुके हैं उनके लिए ये एक बेसिक फंडामेंटल है। बेसिक फंडामेंटल आपका कितना भी आता है, कितना भी कराया है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। कहने के लिए बोलते हैं मैं रोज़ इधर रेट ट्रेड किया, उधर ट्रेड किया, लेकिन बैलेंस शीट नहीं बनता। आपका बैलेंस शीट ऐसे भी बन जाता, वो फिर नेगेटिव होएगा। तो आपके लिए सिर्फ आप सेटअप करो, एक दिन का एक ट्रेड, 2 ट्रेड, 3 ट्रेड। फर्स्ट ट्रेड नहीं है फिर सेकंड ट्रेड रिस्क ले लो, थर्ड ट्रेड ले लो, उसके बाद क्लोज कर दो। फिर ट्रेड लेने के बाद 15 मिनट के अंदर कुछ नहीं हुआ, वो ट्रेड ही क्लोज करने का, ट्रेड में नहीं रहने का। क्योंकि ट्रेड में आप रहेंगे, आपका क्या है, टाइम वैल्यू, टीटा गमा आपका पैसा खाएगा खाएगा। एक बार ट्रेड में गया, गया तो गया, वापस रिवेंज नहीं रखना, मैं उसमें कलेक्ट कर दूंगा, ये करना वो करना, कुछ भी नहीं। कूल, दिस इज यूर एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज, इमोशनल एक्सरसाइज, डिसिप्लिन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
क्या लगा आप लोगों को मार्केट आज कहाँ क्लोज होगा? मिड कैप मिड कैप आज ऐसे साइडवेज होगा। निफ्टी बैंक निफ्टी रीटेस्ट करने आ रहा है अभी। मार्केट काफ़ी देर यहीं पे ही आपका चल रहा है काफ़ी। आज एक्सपायरी नहीं होता मिड कैप का, सो इसी 36 पॉइंट आपका निफ्टी ने कराया, बट एक्सपायरी नहीं आता आज निफ्टी मिड कैप का। आज भी मार्केट ऊपर जाता, आज एक्सपायरी है इसलिए आपका यहाँ पे साइडवेज होगा। आज का एक्सपायरी में आप मार्केट में ट्रेड मत करो निफ्टी मिड कैप में।
टेक टुमारो, 0-0 मत हो जाओ. இந்த சேனல்ல யாராச்சும் தமிழ் ஆடியன்ஸ் இருக்கிறாங்களா? இருந்தா ஒரு மெசேஜ் கொடுங்க. लोग टाइम पास कर रहा है, टाइम पास एक होगा अभी. और 10-15 मिनट टाइम पास ही होगा. मार्केट साइडवेज में रहेगा.
Bank Nifty, see above Bank Nifty and Bank Nifty above 20 EMI. Mid cap below 20 EMI. PX जो है इस almost 1.12 और 8% 8% में आपका So whenever you get time, market trade analysis. What have what we do in after the market? We track history data, analysis price pattern, technical indicator and the key economic factor, inflation market movement. If we this is all global market trade, interest rate, inflation, and the event sector performance. Is of analysis. Whenever you get time, weekday, evening time, this is you have to inside of the engine up to do the analysis. The data is available in every the market. You can get analysis back tested. So one way you have to improve, either bank on to someone else. रिस्क मैनेजमेंट आपका बहुत देखना पड़ेगा स्टॉक मार्केट में और इनहेरिट volatility, तो up and down is volatility इंडिकेटर जो है विक्स जो है इन द इकोनॉमिक कंडीशन में होता है ये ऊपर ऊपर इतना आगे पीछे हो जाता देन यू मे बी टेक द कंट्रोल condition to guide to how to hedge against that risk. रिस्क मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है एक तो मार्केट है आपने कुछ लिया था हेज अगेंस्ट रिस्क या और प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द डाउनट्री आपका करना है होगा दैट्स बिहेवियर द फाइनेंस मार्केट और ड्यूरिंग द ह्यूमन बिहेवियर जो इसमें बहुत मैटर करता है इसमें ज़रूर से ज़्यादा इमोशन आप लगा देंगे इमोशन मतलब क्या हाँ मार्केट यहाँ पे नीचे आएगा नहीं ऊपर चला जाएगा ऊपर रहेगा नहीं नीचे चला जाएगा ऐसे आप अपने आप का नहीं रखना मार्केट और ड्राइव बाय द ह्यूमन बिहेवियर ये जो मार्केट का हम देख रहे हैं ऊपर डाउन है ह्यूमन बिहेवियर की वजह से इतना पंच होता है फैक्टर लाइक ए फेयर और ग्रीड प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल आपको रिस्क मैनेजमेंट ले लो बिहेवियर ले लो आपका market or during by human behavior and factor like fear and greed play a significant role.
मार्केट का जिंदा रखने के लिए ये हम लोगों को बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है. We analyze market sensitivity using the sentiment analysis tool. Tracking news and social media tend to understand the collective behavior, and it is important on stock prices also. उनका चलाने के लिए कोई भी न्यूज़ चाहिए, अच्छा बुरा कुछ भी चाहिए, वो अपने हिसाब से उनका थोड़ा उस टाइम वो आपका प्ले आउट कर देगा. रिस्क मैनेजमेंट, बिहेवियर फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट रोल में. देन कम टू द इन्वेस्ट स्ट्रेटेजी. वो आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या ट्रेडिंग करना, ऑप्शन करना, स्टॉक करना, वो एंटायर यूर टेस्ट. सेल करना, बाई करना. Knowledge of various investment strategy including value investment, growth investing and technical trading strategy. ये strategy आपको कुछ इतना तो पता है तो आप they help you to advise yourself uh, asset allocation, risk management identify करके आप इसमें विन विन पोजीशन बना सकते हैं. अब अनदर 7 to 8 मिनट है, आपका मार्केट थोड़ा सा कम करेगा. क्या लगता है आप लोग को मार्केट का आज क्लोजिंग? अभी हमारा पास है आधा घंटा है, 15 मिनट है बेसिकली सब. तो market is good mood. Market typically refers to bullish statement with the investor or
optimistic, leading the risk stock price and overall market gain. Factor contribution is a good mood market can include a strong economic indicator, positive corporate earning, and favorable news event. It's happening the last Wednesday from there now is a favorite positive corporate and every favorable news. That's the reason market also bull. This is called sentiment. So any small good news is for market for the keeping in the mood. So since the last Wednesday, strong economic data, raising corporate evening, learning and rate is like you see positive feeder, fertilizer signals or stable global environment development, increased consumer confidence, strong market movement, government situation, पॉजिटिव एनालिसिस फोरकास्ट इसको बहुत मैटर करता है तो मार्केट को ऊपर रखने के लिए और नॉर्मली strong economic data बोले positive report of the GDP growth, employment rate and consumer spending and the boost investor confidence ये सब मैटर करता है और raising corporate earning मतलब companies report better than expected earning and drive stock prices and increase the overall market statement होता है इसलिए मार्केट का ऊपर जाने का भी बहुत सारे पॉजिटिव नोट होता है लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट मतलब ग्लोबली बात कर रहा हूँ मैं तो इसलिए भी हमारा सेंटिमेंट जो है हाई एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफरिंग कॉर्पोरेट विथ कंज्यूमर स्पेंडिंग सपोर्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ होता है इसलिए भी होता है लुक पॉजिटिव फेडरल रिजर्वेशन सिग्नल्स का कैसे लेता है मार्केट ये भी एक मैटर करता है if FED indicate it is will maintain a low interest rate or pursue support monetary policy it can be encouraging investment तो सोचते हैं यार अभी तो FI से पैसा कैसा लगाने के लिए इसलिए लगाया है stable global environment, reduce the geopolitics tensions and favorable trade agreement can ensure the market confidence also. इसका भी market का आपका good mood रखने के लिए एक supportable होता है. Innovate development the breakthrough भी है कुछ इसका आपका होता है इसका increase the consumer confidence increase the consumer confidence अब बोलो क्या बोलते हैं इसका When consumers feel confident about their financial future, they tend to be spent more defending business on the economic. इसका मतलब increase the consumer confidence इसका बोले जाते हैं इसलिए भी उनका आपका मूड का रखने के एक वो अगेन सेइंग strong market movement मतलब continued upward trend can create a self-reinforcing cycle attending the more investor मतलब investor आप देखोगे तो काफ़ी government stimulus financial measures such as a tax cut of interest spending can provide a boost of the economic market वो होना चाहिए था लेकिन हमारा इंडियन मार्केट में हमारा ये थोड़ा सा ये टैक्स वो टैक्स ऐसा करके चल रहा है पर बट इंडियन मार्केट उसका परवाह नहीं कर रहा आगे बढ़ रहा
पॉजिटिव एनालिस्ट फोरकास्ट क्या करता है? पॉजिटिवली अभी ये मार्केट का बात कर रहे थे। पॉजिटिव एनालिसिस फोरकास्ट अपग्रेड एंड ऑप्शन में प्रोजेक्शन फ्रॉम एनालिस्ट कैन लीड टू द इंक्रीज द बाइंग एक्टिविटी। कोई भी चीज़ आप अभी है, फेस्टिवल दिन आएगा, ये है, अभी नाउ द मार्केट अप जाने के लिए बहुत सारे पॉजिटिव एनालिस्ट फोरकास्ट होता है। सो दिस ऑल important. Now I'll see another 10-15 minutes anchor to the market what they do. अरे नो क्वेश्चन आंसर एक्चुअली हम लोगों बैठे हैं so after the market what we do that tech stock companies technology sector often see volatility and growth potential look for the trend in all cloud computing and cyber ये सब हम लोगों इवनिंग टाइम हम लोग इसको वर्कशॉप खुद डेवलप के लिए कर लेते हैं। और कुछ जो है पॉजिटिव करने के लिए हेल्थ केयर स्टॉक्स होता है, फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक कंपनीज कैन बी इन्फ्लुएंस्ड द न्यूज़ रिलेटेड टू ड्रग अप्रूवल द हेल्थी फॉर्म। इसका भी मार्केट ऊपर जाने का एक पॉजिटिवली आप कल के लिए आप उस तरह का स्टॉक हम ढूंढ सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी, यस, रिन्यूएबल एनर्जी है। With increased the focus on the sustainable companies in solar, wind, or electronic vehicle, maybe see strong interest of in future market. So I'm saying about what after close the market we'll talk about tomorrow, and tomorrow market के लिए क्या करना क्या नहीं करना, that's after the class. We maybe be some kind of search and net take the point of renewable energy. But we are not sharing that one here, but I'm overall telling how you develop yourself the skills. कल मार्केट जाने के पहले थोड़ा सा पैनल कंज्यूमर डायरेक्शनल रिटेल एंड कंपनीज एंड ट्रैवल एंड एंटरटेनमेंट कैन बी बेनिफिट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर स्पेंडिंग द ट्रेंड। आप कोई भी कंपनी इस तरह का जो है स्पेंड करता है उसमें भी आप फोकस करो। स्टॉक मार्केट में आप लोगों का उसमें कर सकते हैं। आपका फाइनेंस अच्छा होता, फाइनेंस स्टॉक द बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रक्शन ऑफ्टन परफॉर्म विल बी द रेस इंटरेस्ट ऑफ रेट एनवायरनमेंट, ये भी आप दे सकते हैं। इसमें हम लोग स्मॉल कैप स्टॉक आज वी विल टॉकिंग अबाउट मिड कैप जैसे कंपनीज विद स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है, पेइंग डिविडेंड एंड कैन बी अट्रैक्टिव फॉर द इन्वेस्टर सीकिंग इनकम। तो वो एक आप उसमें भी आप उसमें लगाने के लिए हम कोशिश करते हैं। और अमेरिकन मार्केट्स लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी इन इंटरनेशनल मार्केट दैट मे बी अंडर प्रोटेक्टेड। मतलब इंटरनेशनल मार्केट हमें इतना पता नहीं वो टैक्सेस ऐसे कुछ करने का, लेकिन हमारा सिस्टम अलग है। हम काफ़ी पहले निर्भर था FI, अभी थोड़ा इंडिया में वो सब कम होता जा रहा। नाउ दे विल टेक आवर सेल्फ द कॉन्फिडेंस। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट REIT रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है, दिस कैन बी प्राइवेट एक्सपोजर टू रियल एस्टेट मार्केट एंड टिपिकल पे डिविडेंड्स। वो ग्लोबली बहुत अच्छा है, तो ये हम चाहते हैं। ETF कंसिडर सेक्टर स्पेसिफिक ऑफ देयर देन ETF देन अलाइंग विथ मार्केट ट्रेंड ऑफ इकोनॉमिक फोरकास्ट। ये सब आप ये कल टुमारो के लिए हमें क्या ऐसे हेडलाइंस है, क्या करते हैं स्ट्रेटजी कंज्यूमर टुमारो ट्रेडिंग का,
always do your own research and contribute the finance या advice के पास चले जाओ, या आप लोगों कुछ टीम बना के there are the 10 type of the stocks security आप कैसे करना है होमवर्क के लिए हम लोग को ये बताते हैं. Tech stock, health care, renewable energy, consumer directly, finance stock, small cap stock, dividend stock, emerging market, REIT, FT, ये इसके बारे में थोड़ा थोड़ा मैंने एक्सप्लेन किया था. सो आप रिवाइंड करके इसका चेक कर सकते हैं. So this is about today. The market may be closing here. I told you what I told you. According to the option, the market going to be sideways in mid cap. That's the thing. See, I hope. I thought maybe tomorrow, today is going to be Nifty already cross over this one, where we given the 2925950. Now it's pop upping. It's good news. See, markets were taking the trading levy spark is supporting live event, especially in circle of leveling listing important some tips. Tips is what similar key point what I talk about in the early times. Benefit of recap the main message you want your audience to remember. अपने लिए मेरा audience के लिए उनका लगाने के लिए कॉल टू एक्शन वो सिर्फ हम लोग जो स्टूडेंट का ये करते हैं उसमें एंकरेज योर ऑडियंस टू टेक स्पेसिफिक ऑर्डर तो उसका लर्निंग के लिए होता है. आप लोग शेयर कर सकता है पर्सनल हमारा स्टोरी रिलेटेड स्टोरी कैन बी इन्फॉर्म इन योर स्टोरी एंड क्रिएट एन इमोशनल कनेक्शन. तो वहाँ पे आप लोगों का ये कर सकते हैं. I don't know how many people are watching this. Thank you, audience, experience, gratitude for their time and participation to our live program. We can give the more questions, invite the question, encourage dialogues, maybe invite the question and discussion about the panel. You can escalate your the message and inspire your audience. Audience का काफ़ी सारा powerful word होता है. उसका हम लोग keep in mind कभी-कभी हम visualize बताते हैं. Some movement in creative memorable visual with a strong visual of reason of your team. ऐसे हम ये जो drawing कर रहे हैं ये तो visualize करके हम लोगों will talk about things. Ending with confidence is delivery your closing remark about the conversation enthusiasm. Conversation में अभी तो ऐसे हिंदी इंग्लिश तमिल में बोलता हूँ लेकिन अकॉर्डिंग टू जो मेरे पास क्वेरी आता है उससे भगाता हूँ. और प्रोडक्टिंग information मैं शेयर करता हूँ how the audience can be reached to your future engagement of your questions and answer QA. हमारा aim to uplift and motivation in the audience and they were conclude. मतलब ये हम timeline बनाते हैं setup बनाओ stop loss करो. दो ही word है setup और stop loss. ये किस दिन बनाना सीख लो. This takes 6 months to 1 year. It's not easy. बोलना बड़ा आसान है, lip service है. But it take time to understand.
So another 5 minute, 10 minute to so Nifty they respect our setup. Bank Nifty not reached, but Nifty is almost respected today market. This is what setup we can see. What setup we given? We given the setup like maximum top we are given, or how the setup is work. The setup is we given the top level 25,950 and the bottom is 25,690 and the middays is 25,8488. So the how the setup is work, they give the Nifty's respect the setup. Bank Nifty now maybe like to come to 53,99990. Keep sharing our trade live blog for more support and more questions in online live. Thank you for thank you all for training into our channel. Your support means the world to us. If you were enjoyed this content, do not forget to like, subscribe and hit the notice bell so you never miss a update. We love hearing your through. So leave comments below with what you do like, do not like to see next. Until next time, take care and keep smiling. Namaskar.